Hello guys, hello. Like the stream everyone who is new in the stream, like the stream. Let's start the day. Make this session interactive, okay? Bitcoin में I was just about to enter here but एक ही एक कैंडल होना था इधर पे. I just needed one candle to close below this level. Here अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे थोड़ा भी क्लोज होता ना, then I would have entered on this reversal here, capturing this buy side. But it did not close. फिर से आया but ये इधर से ही उठ गया, इधर पे क्लोजिंग नहीं हुआ. We need a closing there.
हाय ब्रो, हाय 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 हाय। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द डे। पॉजिटिविटी एंड फुल फोकस। कैसे हो भाईजान? सब ठीक, सब ठीक। बस लिटिल बिट ऑफ पेन इन माई आईज। मेरे को ग्लासेस पहन के बैठना है अभी। कल शाम वाली स्ट्रीम मैंने मिस कर दी। नो प्रॉब्लम, अभी बैठो। इधर पे भी अब एक ट्रेड मिस कर देते। अगर बस इसके नीचे एक कैंडल तो भी ये क्लोज हो जाता ना, तो इधर से मैं बाई साइड की एंट्री उठा लेता, बट कैंडल ही क्लोज नहीं हुई, जस्ट टू का रिजेक्शन एंड वेंट अप। एक एक रिजेक्शन चाहिए था मेरे को, लाइक वन कैंडल टू क्लोज। सो द लॉजिक वाज 15 मिनट बाइंग लेवल। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ, रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट होकर रेसिस्टेंस बना। ये जोन के अंदर हमने अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम का लेवल ड्रॉ किया। दिस वाज द 1 मिनट टाइम फ्रेम लेवल। ओके, तो बस इसके नीचे मेरे को आई नीडेड ओनली वन कैंडल टू क्लोज, सो दैट जैसे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, फ्रेश लिक्विडिटी आएगी न्यू सेलर्स। तो न्यू सेलर्स यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट ऊपर रहेंगे ना, तो ये कैपिटल हंटिंग मूव मेरे को चाहिए था, बट ये बस नीचे आके रिजेक्शन लेके ऊपर चले गए। एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए था मुझे, तो इधर से फिर से मैं अभी बाइंग पे बैठा हुआ था। कैंडल को पॉसिबल प्रिंटिंग लूंगी। बाजू में बैठो है तो इधर पे गोल्ड, इधर पे बीटीसी। मैं वेबकैम को इधर नीचे पे सेट कर लेते हैं, ताकि दोनों साइड बाय साइड जो है हम लोग दोनों देख पाए, दोनों साइड चार्ट्स को, गोल्ड एंड बिटकॉइन बोथ। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार दोनों साइडों चल रहे हैं, बट बीटीसी में जो है ना, एक वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाइंग। अगर फिर से ना, सी, नीचे आके फिर से ये लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज करके रिवर्स करता है ना, वी कैन गो फॉर अ बाई साइड। इट कैन बी अ पुल बैक, देन अ बाई साइड ट्रेड। और इधर से अगर हम लोग बाइंग पे बैठ गए ना, देन द नेक्स्ट टिप इज 90,315। सो आराम से 200, 250, 300 कुछ भी मिल सकता है हमें। तो दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। ब्रो आज जल्दी लाइव आ गए। मैंने बोल दिया था ना, मैं मंडे से आई एम चेंजिंग द लाइव स्ट्रीमिंग टाइमिंग्स फ्रॉम 11 AM to 3 PM, देन शाम में 6:30 to 9 और 9:30 PM। क्योंकि अब मेरे को कुछ काम धाम नहीं है, मेरा कॉलेज वगैरह सब खत्म हो गया, तो इसीलिए दो दो वी आर एक्सटेंडिंग द टाइम, ताकि हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके मार्केट्स को। फील लाइक दिस इज गोइंग टू कम एंड गिव अ पुल बैक। वेबकैम किधर पे लगाऊं सही रहेगा? शुड इट बी हियर? इधर पे लगा दूं क्या? थोड़ा इधर पे लगा दूं ताकि इसका ये भी परफेक्ट। इसको वेट करो, ये ड्रॉ दिस लेवल वो जैसा ऐसा जाएगा ना, इधर से उठाते हैं बाइंग पर ही। और इफ बाई चांस इफ इट गिव्स अ, ये बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया विद स्ट्रेंथ,
देन वी हैव अनदर बाइंग लेवल हियर, नीचे इधर पे एक बाइंग लेवल है। लाइव तो या ब्रो कर दिया था, आज तो कर दिया था। कल ये बहुत अच्छा ट्रेड था बट गोल्ड 1 मिनट टाइम फ्रेम है। इधर पे एक ट्रेड तो है बट इट्स अ बिट रिस्की ट्रेड। रुको। दिस इज वन ट्रेड फॉर्मिंग इन गोल्ड, बट बिटकॉइन में ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है विच आई फील। गोल्ड में भी ठीक ठाक 126 का टीपी मिल सकता है। देखते हैं हाउ इट रिएक्ट्स है। ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। और कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग? आर यू मेकिंग प्रॉफिट्स, आर यू मेकिंग लॉसेस? मैं लॉस में हूँ काफी। कितने भाई? $560 रियल में या डेमो में? रियल में भाई। देन हाउ मच इज द कैपिटल देन? अगर आप $560 का लॉस कर रहे हो, हाउ मच इज द एक्चुअल कैपिटल देन? 1200। In how many trades you lost $560? By the way, like the stream, सब लोग सब्सक्राइब टू द चैनल, धीरे धीरे ग्रो करते एक साथ। You know where most of the people go wrong? उनको पता ही नहीं है कि एंट्री एग्जिट किधर पे करना है, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट लेवल्स। दे ट्रेड ऑन द रॉन्ग लेवल्स बिकॉज ऑफ विच उनके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा ही हिट होते हैं। गोल्ड में उसको हाइड कर लेते हैं। फ्राइडे से पहले तो प्रॉफिट में था, फिर मार्केट ने बहुत लॉस कर दिया, सिर्फ ऐसे ही जाना शुरू हो गए। यू नो मैं भी आपके जगह पर था थोड़े साल पहले।
नॉट थोड़े साल, लास्ट ईयर एट दिस टाइम ओनली, जब मैं बैक टू बैक लॉस हो रहा है, बैक टू बैक फिर से वही क्वांटिटी से ट्रेड्स मारते ही जा रहा हूँ और मेरा पूरा अकाउंट ब्लो। फॉलो दिस रूल। एक ट्रेड लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस चले गया, वेट करो नेक्स्ट सेटअप बनने का, डोंट री एंटर ऑन द सेम लेवल, ठीक है। जो लेवल से आपका एसएल हिट हुआ, फिर से वही लेवल पर आप एंट्री मत करो, बिकॉज एक टाइम आप प्रूफ रॉन्ग प्रूफ हो चुके हो। अगेन वाई डू यू वांट टेक योर एंट्री ऑन द सेम लेवल, फिर से एसएल खाओगे। तो एक लेवल पर एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट स्टॉप देयर। आफ्टर दैट नया सेटअप फॉर्म होने दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि मेरे एंट्री एग्जिट्स कहाँ पर करना है, नॉट रैंडमली एनीवेयर, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हो गया। सेकेंड ट्रेड जो आप लोगे ना, व्हेन ओनली एंड ओनली व्हेन योर प्रॉपर सेटअप इज फॉर्म, ठीक है, तभी गो विथ हाफ क्वांटिटी। जब मान लो अब 0.1 से आपने ट्रेड लिया, 10 पिप्स के हिसाब से आपका $10 का लॉस हो गया। नेक्स्ट ट्रेड गो विथ 0.05, ठीक है। इसमें आप एम करो कि कैप्चर एटलीस्ट 35 40 50 पिप्स, ठीक है, ताकि आपका लॉस रिकवर होकर कम इनटू प्रॉफिट। अगर फिर से आपका लॉस हो गया, देन यू विल बी एट -5। थैंक्स फॉर पोस्टिंग लाइव नोटिफिकेशन डालेंगे, या आई विल बी पोस्टिंग इट रेगुलरली फ्रॉम नाउ। तो अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, सेकेंड में भी, सो यू हैव टू क्लोज द ट्रेड इन -15, ठीक है। आपका बड़ा लॉस भी नहीं होने वाला है। व्हाट यू गाइस डू इज, ओके, मेरा ये एक लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से री एंट्री करूंगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट, फिर से री एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस हिट, एंड यू एक ही लेवल पर 3 4 ट्रेड ले लगे विद द सेम क्वांटिटी, इसलिए आपका लॉसेस इतना बड़ा होता है। इवन आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप लोग है ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी सबसे पहले सीखो, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट मेकिंग मनी। गोल्ड बायस अप है डाउन, अकॉर्डिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, गोल्ड जो है अभी सेल साइड जाने के देयर आर मोर प्रोबेबिलिटीज। बट इधर पे थोड़ा केयरफुल भी रहने का जरूरत है। हम्म, कैन प्रोबेबली डू दैट। इसका टॉक्सिक में तो मार दिया है। इधर से कंफर्मेशंस तो है कि इट कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड, बट एंट्री मतलब हम जस्ट सीइंग कि स्टॉप लॉस कितना लगेगा। स्टॉप लॉस 10 पिप्स का लगेगा, मिनिमम टीपी 25 पिप, बट इट ब्रेक्स दिस,
हम्म, इधर बस प्रॉब्लम ये है कि इधर बहुत सारे बाइंग लेवल्स है जो अभी गोल्ड को बहुत परेशान करने वाले हैं। गोल्ड अभी एक डोजी बना देगा। गोल्ड जो है अभी एक डोजी बना देगा। 1 सेकेंड। I'll be back in 1 minute, guys. 1 minute. गोल्ड अभी जैसा दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ना, मेरे को लग रहा है दिस कैंडल इज गोना बी अ डोजी कैंडल। नीचे से भी पुश हो रहा है, ऊपर से भी पुश हो रहा है, दोनों साइड से पुश हो रहा है। गोल्ड इज अ बिट ट्रिकी टू ट्रेड नाउ। इंस्टेड वी कैन एम फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन में कोई ट्रेड देख सकते हैं। लाइक द स्ट्रीम गाइस। और else what we can do is गोल्ड को ऊपर जाने दो थोड़ा। वी कैन एम फॉर दिस लेवल। ये लेवल से एक सेलिंग एम कर सकते हैं गोल्ड, क्योंकि इधर पे पूरा देखो, नीचे से भी बाइंग प्रेशर है, ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर है, तो इधर पे बीच में डोजी बन जा रहा है। कैन वेट फॉर दिस लेवल फॉर सेलिंग 15 मिनट्स पर। इधर पे मत ट्रेड करो। कैंडल ही देखो कैसा बन रहा है, दोनों लेवल्स के बीच में जो है फंस गया है एक ट्रेड में। मेरे भाई इसको एग्जिट कर दो। एक ही चार्ट पर रहते हैं, ज़्यादा डेटा दिखेगा। दो दो चार्ट में जो है डेटा कट हो जा रहा है, ये पीछे का नहीं दिख रहा है। लेट्स स्टिक टू वन चार्ट। गोल्ड में आई सी माय फोन।
गोल्ड आ रहा है। द पीपल आर वॉचिंग यू, व्हाट्स योर एज? आप लोगों का एज क्या है? गोल्ड क्या कर रहा है भाई? जस्ट सी गोल्ड। गोल्ड अटक गया है। एंड इफ बिटकॉइन को सेलिंग पर जाना है, राइट? इफ इट अगर यहाँ से बाइंग को नहीं जाके बिटकॉइन वांट्स टू गो इनटू सेलिंग, तो लेवल ब्रेक करके फिर से वापस से ये लेवल को टेस्ट करने आना ही पड़ेगा। तब इधर से भी हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं टिल दिस सपोर्ट लेवल। दिस कैन हैपन। अगर इसको बाइंग पर नहीं जा रहा है, क्योंकि आई कैन सी क्लियरली कि इट्स ट्राइंग टू गो डाउन साइड। अब ये क्या है, दिस इज अ रेसिस्टेंस विच गॉट ब्रोकन एंड नो इट्स अ सपोर्ट, राइट? सपोर्ट पर इट्स कंटिन्यूसली जस्ट इनवाइटिंग द बायर्स हियर। जितने भी बायर्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं ना ऑन दिस सपोर्ट, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे लगे होंगे। सो बिटकॉइन कैन गिव अ डाउनसाइड मूव, देन अ पुल बैक टू टेस्ट दिस लेवल अगेन। फिर एक डाउनसाइड मूव दे सकता है। इवन दिस कैन हैव, दिस हैज सम पॉसिबिलिटीज। आज कोई न्यूज़ है क्या, बाय द वे? न्यूज़ इन द मार्केट? आज तो कुछ नहीं है। टुडे देयर इज नो न्यूज़। आई वुड प्रिफर गोल्ड को ना टिल 12:30 और 1 गोल्ड को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बाय द वे दिसंबर स्टार्टेड, राइट? दिसंबर में मार्केट्स आर गोना बी स्लो। ऊपर से सेशन टाइमिंग्स वरना डिले हो गया है, तो बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो वी हैव टू वेट इन गोल्ड टिल 1 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए।
So you're 7 years older than me. So at what age did you start trading? I discovered trading उसके बाद मैं start किया था when I was 17 years old, and now I'm gonna turn 21 in next 4 months. So this is the fourth year of mine in trading. 1 year मेरा Indian markets में चले गया. Indian markets the worst markets in the whole world, which I say personally. Forex में 2 years हो गया. Now this is the third year in forex market. So you're still a beginner with no strategy, right? If you're a beginner, right, I'll tell you only one suggestion. How much capital is there in your account right now? अभी कितना कैपिटल बचा है आपके पास? Your current capital. तकरीबन 2000 का लॉस है मेरा. आई एम नॉट आस्किंग यू द लॉस अमाउंट, आई एम आस्किंग यू आपके पास अभी कितना कैपिटल बचा है आपके अकाउंट में? हाउ मच कैपिटल इज लेफ्ट इन योर अकाउंट? एटलीस्ट भाई 125 कैपिटल रह गया है. फॉर द नेक्स्ट 2 months trade from 0.02 lot or 0.0, yeah, 0.02 lot is enough. इससे ज़्यादा का मत ट्रेड लो. और in every trade which you take, try that your loss should be around $2 to $3 at least. इतना ही maximum $2 to $3 का ही लॉस रखो, or else you'll just blow your account fully. 0.02 से ही लो. Don't touch the process. And I'll suggest you सबसे पहले, like how I have a proper strategy, right? मैं कैसा प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर एंट्रीज के साथ ट्रेड प्लान करता हूँ. लर्न अ स्ट्रैटेजी. उसके बाद लर्न हाउ टू टेक प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट्स. आपका स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हैं सही जगह पर. लर्न एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग फर्स्ट. सबसे पहले कौन से पेज ट्रेड करना है, व्हाट आर द टाइमिंग्स, सब कुछ पहले सीखो. देन गो विथ रियल अमाउंट. विदाउट लर्निंग ओनली, इफ यू जस्ट जंप इनटू ट्रेडिंग, ऑब्वियसली आपका लॉस होगा ही. गोल्ड अगर दिखा रहा है तो यहाँ तक तो आएगा ही. इन दिस लेवल यू कैन गो फॉर अ बाय. जोन के अंदर ये बाइंग लेवल है. एंड मे बी आप लोग जो है जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किए, यू हैव नॉट ट्रेडेड बाय योरसेल्फ, यू आर जस्ट कॉपिंग अदर्स ट्रेड्स. बाकी लोगों का ट्रेड सब कॉपी कर रहे हो जस्ट. नाइस गोल्ड, नाइस मूव्स. आने दो, इधर से उठाते बाइंग साइड में. मे बी दिस वीक ना, इफ यू गो टू माई चैनल, ये मेरा चैनल है, इधर पे मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी पड़ी है विच इज नॉट वर्किंग दैट मच एक्यूरेटली. अभी इसका जो ये है ना, विन रेट थोड़ा सा कम हो चुका है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो चुका है. तो नाउ आई एम नॉट गोना ट्रेड दिस थिंग.
मेरा एक नया स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया है, ठीक है, विच विन रेट इज रियली गुड and the frequency is also good. You can see in the live streams only. So I'll be uploading a video on that maybe most probably this weekend. So you can practice the setup. मैं इसको ट्रेडिंग करता था, पेमेंट प्रॉफिट करा, विड्रॉवल भी पर लॉस में गया तो मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई और मैंने अकाउंट वाइप कर दिया 2 से 3 दफ़ा। हैपेंस, मेरे साथ भी हुआ। व्हाट्स अ कोर, आपका फाउंडेशन क्या, आप किस पर ट्रेड करते हो? फॉर एग्जांपल आई ट्रेड सपोर्ट एंड सप्लाई डिमांड विद लिक्विडिटी। आप किस पर ट्रेड करते हो? और क्या कैंडल बनी थी भाई, क्रेजी कैंडल मैन। वैसे थोड़ा कर लेते हैं। क्या आपने उसे बैक टेस्ट किया? हैव यू बैक टेस्टेड इट? अरे भाई आ जाना भाई, बिटकॉइन। 8 से 2 वर्क करती है? 8 से 2 वर्क करती है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आर यू टेलिंग दैट 8 बार में से 2 बार वर्क करती है? तब तो आपका विन रेट भाई, हाउ मच इज विन रेट? इज इट 20% विन रेट? अच्छा, 8 दफ़ा वर्क करेगी, 2 दफ़ा नहीं। यू ट्रेडिंग समथिंग, यू शुड हैव proper knowledge about the strategy. I'll see if I'm free this weekend. I'll make a video about my strategy and tell you guys. नवंबर मंथ तो ऐसे भी पूरा कचरा था। आई मीन सॉरी, अक्टूबर मंथ, या अक्टूबर नवंबर, both the months were very much rough, सिर्फ एसएल एंड गोल्ड में। बीटीसी 30 मिनट्स 1 आवर पर क्या कर रहा है? भैया बीटीसी 1 आवर का बाइंग लेवल पर बैठा है। इस लो का लिक्विडिटी स्वीप होने दो, देन विल गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप here, we can go for a buy side trade.
गोल्ड में भी आ रहा है फॉल, गोल्ड में भी आ रहा है फॉल। 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है ना, ये बिलो दिस लेवल, देन दिस विल बिकम अ रेजिस्टेंस। फिर इसके रीटेस्ट पर हम लोग एक सेल साइड प्लान कर सकते हैं, एमिंग टिल दिस लो। सबसे पहले इसके लो के नीचे से क्लोज करना पड़ेगा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड माय ट्रेडिंग स्टाइल, मैं कैसा ट्रेड कर रहा हूँ? तो इधर पे लगा कर रखो अलर्ट को। आफ्टर 1 more minute वो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इन गोल्ड। क्रेजी ये गोल्ड क्या क्रेजीली गिर रहा है। मोर 12 सेकेंड्स। ये गोल्ड का मूव मिस कर दिया, गोल्ड का मूव मिस नहीं किया, वी आर जस्ट फिल्टरिंग आउट अवर गुड ट्रेड्स। इधर पे ले सकते थे बट ऊपर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिएक्शन कैसा कर रहा था, डोजी बना रहा था, दिस इज अ सडन फॉल, मिस नहीं किया इसे। वी जस्ट लेफ्ट दिस ट्रेड बिकॉज वी वर नॉट कंफर्टेबल। ट्रेड में एक कन्विक्शन भी तो आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना रैंडमली उठा लो। जब पे रेसिस्टेंस बन गया है आराम से बैठ लेंगे ट्रेड, वी हैव टाइम राइट, व्हाई टू रश। अब गोल को ऊपर आने दो, पुल बैक लेने दो, फिर इधर से एक शॉर्ट साइड ट्रेड में घुसते हैं। बीटीसी बीटीसी। ब्रो आप बिगनर हो ब्रो, आप उतना लॉट साइज हैंडल ही नहीं कर पाओगे। मैं जो मेरा एक्चुअल जो मेरा रियल अकाउंट है, नॉट दिस चैलेंज अकाउंट, ठीक है, ये तो मेरा दूसरा एक्सचेंज का अकाउंट है, मेरे तो दो अकाउंट्स है, तो मैं एक्चुअल, इफ यू सी इन माय फोन देयर आर टू MT5, मेरे फोन में दो MT5 है, ठीक है, इधर एक है इधर एक है, तो मैं दो अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। तो जो मैं लॉट साइज लेता हूँ ना, दैट्स वेरी मच हाई। मेरा दूसरा अकाउंट भी है जिसमें मेरे बड़े फंड्स है, इसमें तो छोटे फंड्स बड़े हैं। यू राइट नाउ डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन गेटिंग गुड ट्रेड्स। तो आप मेरे साथ भी, मेरे को डू नॉर्मल ट्रेडिंग, 0.02 से ही करो बस। सबसे पहले हैव एन एज इन ए मार्केट। बिना एज के ट्रेड मत करो।
Canopy एक कैंडल शो देंगे चलता. By the way, gold is also coming. इधर से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है. इतना जल्दी बैटरी ड्रेन आउट कैसे हो जा रही है इसकी तो. मेरे लैपटॉप की बैटरी की बैंड बच गई है अभी. नॉट गिविंग मोर देन 1 hour 1.5 hours बैटरी बैकअप. अगर ये सिनेरियो बना तो इधर पे एक्सेल साइड पे एंट्री ले लेना क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग लेवल है इधर पे. सबसे पहले बट इसकी लिक्विडिटी ले लेना पड़ती. इसके ऊपर जाके इसका जब तक लिक्विडिटी नहीं लेता वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिग मूव. व्हेनेवर वी नीड अ बिग मूव इन द मार्केट वी नीड लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी का वेट करना पड़ता. Yes, but and if anybody wants the access to this indicator with Mastermind view key levels, can message me on Telegram. ये personal indicator है which I have not published it. If anyone wants access, they can get it from me. I have kept the price of $45 for a lifetime of access of this indicator, जिसका आप accuracy देख ही सकते हो. टच करते ही डाउन मूव. इधर भी एक फॉल आया सुबह 6:30. As soon as it touched this level, upside move.
ऊपर एक सेलिंग का लेवल है। यस, बीटीसी में ट्रेड बन रहा है, गोल्ड में भी ट्रेड बन रहा है। बीटीसी में इस लेवल का लिक्विडिटी स्वीप होना मेरे को, लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक अपसाइड मोमेंट चाहिए। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लिक्विडिटी स्वीप ऑन दिस लेवल। इंडिकेटर को अगर हटा दो तो बस इस लेवल का एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए था मुझे को, देन अपसाइड मूव। ये जो मूव है ना, इधर पे ही इधर एक लिक्विडिटी, इधर पे ये कैंडल ली इसके नीचे क्लोज हो जाता तो और रिवर्स करता तो इधर हम लोग फिर से एंट्री मार लेते। लिक्विडिटी स्वीप्स नहीं हो रहा है। इसमें भी रेसिस्टेंस जो बन रहा है ना ऊपर, इसका भी एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, देन डाउन साइड मूव।
This liquidity gives the main fuel for the market to go in our direction. ये जो टच करते ही बिना लिक्विडिटी के गिर रहा है ना, एग्जाम्पल दिस आर द कार्स जो बिना रिफ्यूलिंग करे ना जब जा रहा है, किधर भी कभी भी रुक सकते हैं, इट गोज वेरी मच स्लो, बट जब एक लिक्विडिटी स्वीप होता है द मार्केट कलेक्ट्स इस फ्यूल और अपना फुल टैंक करने के बाद बहुत स्पीड से भी अपना मूव देता है, एंड आफ्टर लिक्विडिटी ग्राम ना द मूव्स आर रियली ह्यूज. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वेट फॉर लिक्विडिटी. इधर पे भी मैं लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर रहा था. अनदर पेस्ट में ट्रेड नहीं करता, आई ट्रेड ओनली बिटकॉइन एंड गोल्ड. पीसफुली वेट फॉर these levels only. गोल्ड आ रहा है. taking rejection from the same level. ये कैंडल को इसके ऊपर क्लोज आने दो. कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ड्रॉप है ऐसा. लेट दिस वन कैंडल क्लोज अबाउट दिस. क्लोज नहीं हुआ. नेक्स्ट कैंडल अटेम्प्ट कर रहा है. अच्छा, अच्छा है. 15 मिनट का न्यू कैंडल ओपनिंग भी हो रहा है. एक टॉपिक मारने के चक्कर में ऊपर क्लोज करेगा, फिर एक टॉपिक मार के इसके नीचे क्लोज करके कंटिन्यू इनटू सेल साइड ट्रेड्स. बीटीसी क्या कर रहा है? स्पीड पकड़ लेते हैं इधर से भी. टेन पिक्स का सेल इसके ऊपर ऐसा.
अरे भाई चैनल नहीं करना था मेरे को। ये सब छोड़ो, बाद में देखते हैं। गोल्ड ब्रेकआउट कर रहा है। इफ दिस रिवर्सेस ना, देन यू कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। अगर ये अच्छे से रिवर्स करता है तो 13 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ, इफ दिस रिवर्सेस ओनली, easily you can get around 160 pips। किसके ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है अभी। मैं भी उठा लेता हूँ मेरा MT5। स्टॉप लॉस विल बी 4210.88। अगर ये अच्छा खासा रिजेक्शन देता तभी। एक सेलिंग लेवल पर तो है। एक टॉप भी 15 मिनट्स का ये कैंडल फ्लिप होने पर ही ले लो। दिस कैंडल फ्लिप्स, कैंडल बन सकती है। एंड और यू कैन डू वन थिंग, जो फर्स्ट एंट्री इधर पे है ना, एट दिस पॉइंट एंटर विथ हाफ क्वांटिटी। ठीक है, अब ये रिवर्स करेगा ना, एंटर विथ हाफ क्वांटिटी। फिर से जब एक पुल बैक लेके फिर से जब ये क्रॉस करेगा ना, एट दिस पॉइंट गो विथ फुल और हाफ क्वांटिटी ऐड करके गो विथ 100% क्वांटिटी, ओनली एंड ओनली इफ इट रिवर्सेस फ्रॉम हियर। वरना it does not make any sense to trade here। फिर यही लेवल का वेट करना पड़ेगा। पॉइंट डूइंग, दिमाग खराब कर रहा है। इधर भी एक सेलिंग लेवल है, इसको भी मार्क कर दे रखो। RR को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। नीचे के लेवल से तो नहीं ले रहा, विल ट्राई फ्रॉम दिस लेवल। ये लेवल से सेलिंग प्लान करते हैं। अब डिलीट कर देता हूँ, पहले आने दो। इधर भी सेम प्लान रहेगा।
बीटीसी में अगेन फिर से जब ये लेवल ट्राई टेस्ट करने आएगा ना, फिर से हम लोग बाइंग का ट्रेड विल प्लान है, बाई साइड ट्रेड फ्रॉम हियर अगेन. बैंगलोर का वेदर इज क्रेजी नाउअडेज भाई, सच में इतनी ठंड हो गई है ना इधर पे. पूरे हाई सेलिंग लेवल से इधर पर हुए हैं. इसी डेस्परेशन में आप लॉस कर देते हैं ब्रो. एक लिक्विडिटी स्वीप तो होने इधर पे एंट्री करोगे, आप स्टॉप लॉस कम पर रखोगे इधर, यू विल कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 40 पिप्स.
लिक्विडिटी स्वीप तो होना था भाई. Liquidity sweep is very much important for proper entries and proper stop loss levels. इधर पे आप एंट्री कर लेते हैं अभी सेल इधर पे. स्टॉप लॉस किधर पे लगाएंगे आप? अबाउट दिस लेवल of 50 pips, और you will just patiently wait for a liquidity sweep above this level, और इसके ऊपर आप 10 pips का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे. पेशेंटली वेट करो. इधर पे एंट्री करते हैं इंस्टेंट रिवर्सल देखो. वेट पेशेंटली. इसको एक करने दो पहले. बिकॉज सी इवन दिस रेसिस्टेंस इज अनटैप्ड येट. इसको टैप करने जाएगा तो एक कैंडल तो क्लोज हो ही जाएगा, फिर वहां से रिवर्सल लेगा, हमारा सेल साइड एंट्री ट्रिगर हो जाएगा. इसे भी 20-21 पिप्स आने का है बिटकॉइन. 20-21 पिप्स के लिए मर जा रहा है. अगर अभी पुश करने वाली है प्राइस इसके ऊपर. देखो पेशेंटली वेट करो थोड़ा.
प्राइस रिजेक्ट कर रही है, कैन सी इधर नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का तो वेट कर लो। बीटीसी भी आ रहा है, आने दो बिटकॉइन को भी, इसे भी पकड़ दे, लिक्विडिटी स्वीप के बाद इसको भी बाय करते हैं। If anyone is getting bored in the stream or they're not liking my way of trading, can join some other stream. पर मैं जब तक मैं जो प्लान करता हूँ, it does not go according to it, I don't trade it. क्योंकि जब whenever I trade, my first priority is not making money. I try कि मेरे को आज पैसे नहीं बनाना है, and like I don't think about it. I come with the mindset कि मेरे को आज लॉस नहीं करना है, मेरे को बकवास ट्रेड्स में घुस के मेरे को लॉस नहीं करना है। एंट्री करते अभी अब लॉस में होता है। Patiently wait guys, wait for your levels. Trust your setup and wait for your levels. एक liquidity sweep होने दो, then you can go. BTC is coming. Seriously, I just love this indicator. जो भी बंदा इधर से सेल करके बैठा है, इस रिजेक्शन से सेल करके बैठा, ऑब्वियसली द टीपी इज डाउन हियर राइट, इधर तक वेट करेगा। नो वन हैज एनी आइडिया कि इधर से मार्केट रिवर्स करने वाला है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट आई टोल्ड यू कि इधर से मार्केट को पुश किया जा सकता है। कैन सी द बाइंग प्रेशर फ्रॉम दिस लेवल।
क्या हेडेक हो रहा है भाई। Bitcoin is finally coming to our buying level. इधर से उठाते हैं फिर से बाइंग को बिटकॉइन। इसका लिक्विडिटी स्वीप के बाद मैं बिटकॉइन बाई करने वाला हूँ। एंड जिसमें पहले सेटअप बनेगा आई ट्रेड इन दैट पेयर। इफ गोल्ड में सबसे पहले सेटअप बन जाएगा और सेलिंग आई गो फॉर सेल्स इन गोल्ड, आई गो फॉर बाइज इन बिटकॉइन। अर्ली सेलर्स को अभी पहले का सब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जिसने जिसने भी इधर पे अर्ली सेलिंग्स पे घुसा था ना, वो सबको निकालेगा, मार्केट निकाल के जाएगा। अरे बीटीसी इतना गिर गया और थोड़ा सा गिरना हो, इतना गिर गया, बस एक छोटा सा एक पुल बैक लेके साथ जाने में इसकी मौत हो जा रही है। अजीत भाई क्या हाल है? सब ठीक ब्रदर, सब ठीक, सब ठीक। एक पुल बैक लेने में इसकी मौत हो जा रही है। सब बाकी लोग क्या हाल चाल, क्या कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में? पैसे कमाने के झाड़ू जो है। अरे भाई, what the hell is this background noise man? सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर में रहता हूँ मेरे। तो किचन बिल्कुल मेरे रूम के वो साइड है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बट आई कांट हेल्प इट। क्या मजा रहा है ये बिटकॉइन। इधर पे बस एक इसको एक लिक्विडिटी मूव, लिक्विडिटी नहीं चाहिए क्या इसको ऊपर जाने के लिए? अच्छा बिटकॉइन, चलो गोल्ड आ रहा है अपना, गोल्ड भाई आ रहा है, गोल्ड भाई आ रहा है। कुछ होता ही ड्रॉप आएगा।
चीचा ऊपर जाओ। बीटीसी भी आ रहा है, बीटीसी आ रहा है। जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक करो गाइस। मार्क दिस लेवल इन बिटकॉइन, इधर पे आते ही मेरे को जस्ट रिमाइंड मी, टिल देन आई फोकस ऑन गोल्ड। चलो आ रहा है फाइनली। अगेन द सेम गेम प्लान, ठीक है। ब्रेक करके लेट इट क्लोज वन कैंडल अबव दिस लेवल, देन व्हेन इट्स रिवर्सिंग गो फॉर अ सेल साइड फ्रॉम हियर, ठीक है। उससे पहले टैप होते ही मत ले लेना, बिकॉज मार्केट नीड्स लिक्विडिटी टू मूव, और लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर है, तो लेने दो लिक्विडिटी, उसके बाद ही हम जाएंगे फॉर सेल साइड ट्रेड। So that will not go like how we just left this trade here, right? And there is one more sharp psychology. You guys tell right कि मेरा एंट्री हुआ, ट्रेड मूवमेंट इन माय फेवर, पर वापस से मेरा स्टॉप लॉस हंट करके मेरे को ट्रेड से निकालने के बाद वापस से पूरा क्रैश हो गया। दिस हैपेंस विद यू गाइस, राइट? दिस इज द एक्चुअल रीजन कि आप टैप होने पर ही ले लेते हो, आपका भी लिक्विडिटी इधर जमा हो जाता है। मार्केट गोस अगेन, रिमूव्स यू, टेक्स योर स्टॉप लॉसेस, देन डन। ये बहुत डार्क, द डार्कर द लेवल द स्ट्रॉन्गर द लेवल। बहुत डार्क हो रहा है ये लेवल, इसका कलर। तो कैन एक्सपेक्ट अ गुड तगड़ा मूव फ्रॉम हियर। बीटीसी भी आ रही है, बीटीसी भी आ रही है। अभी कंफ्यूजन ये हो चुका है कि शुड वी ट्रेड इन गोल्ड और शुड वी गो फॉर बिटकॉइन, क्योंकि दोनों तरफ भी सेटअप बन रहे हैं अपने। ओके, गेट रेडी गाइस, दोनों ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स सी। बिटकॉइन को तो अभी टाइम है, गोल्ड आ रहा है। जस्ट होप कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो सेलिंग पकड़ेंगे ना इसमें। बस ये इधर से फिर से रिजेक्शन ना ले, मेरे को इरिटेशन हो जाएगा। बस एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाइए, एक कैंडल प्लीज, वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। उससे ज्यादा जाएगा ये ट्रेड अगर इधर से लिक्विडिटी उठा लेगा ना ये। बस 36 सेकेंड्स और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर ले, इसके ऊपर एक बस एक 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रखो और घुस जाओ गोल्ड में। 100 पिप का मिनिमम टीपी के साथ, बस ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए, नायल को 0.04, बस इधर से प्रॉपर रिजेक्शन लेके यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, मजा आ जाता। अभी रिजेक्शन ले, वरना इधर पे क्लोज हो।
ओके, कैंडल इज क्लोज. अब इधर से इफ इट टेक्स अ गुड रिजेक्शन एंड इट क्रॉसेस अवर एंट्री लेवल, एंट्री ट्रिगर हो जाएगी अपनी. पेशेंटली वेट किया है एक लेवल के वास्ते, तब से सेलिंग लेवल पर ही है. सब पूरे के पूरे सेलिंग लेवल्स पर है. रिजेक्शन ले लेना भाई, क्यों नाटक करता है ये गोल्ड इतना ज्यादा. कौन भी नाटक कर रहा है. लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दी भाई, लिमिट ऑर्डर प्लेस मत करो भाई, लिमिट ऑर्डर मत प्लेस करो. ऊपर निकल गया तो बैड लक, कुछ नहीं कर सकते. बिटकॉइन के लिए वेट करना पड़ेगा फिर. लिमिट ऑर्डर आप प्लेस करोगे, इधर रिटेस्ट करने आएगा आपको, लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होकर स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चले जाएगा आपका. डोंट प्लेस लिमिट ऑर्डर्स. डू मैनुअल एंट्री एंड मैनुअल एग्जिट. बस स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम पर. एंट्रीज डू इट मैनुअली. इधर पे अगर मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट लेवल इधर पे ही है गोल्ड का. होपफुली एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाए वरना हो गया. के बाद तो मिस गया 23 पे. अगर ऐसा कुछ भी करा ना, तभी भी इधर पे एंट्री कर सकते हैं आफ्टर पुल बैक. क्योंकि इधर से आप डायरेक्टली एंट्री कर लेंगे ना, व्हाट इट विल डू, अगेन इट विल कम टू टेक अ पुल बैक, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके गिर जाएगा. सपना टूटा है दिल, ये महीना ऊपर का ऊपर चले जा रहा है. बीटीसी भी नाटक कर रहा है तब से. एक लिक्विडिटी स्वीप के लिए मर जा रहा है. अंदर पे लेवल बन रही है क्या. अगर पहले से मैं बता दे रहा हूँ प्लान, बहुत इससे यहीं से होगा इंशाल्लाह. लिसन लिसन, प्लान अभी से मैं बोल दे रहा हूँ. देखो यहाँ पर आएगा, इधर से एक प्लान करते हैं क्योंकि 15 मिनट्स का लेवल है. अगर इधर से ही डंप आना शुरू हुआ, अवॉइड द फर्स्ट एंट्री, वेट फॉर अ पुल बैक, गो फॉर अ सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री पर एंट्री मारो. क्योंकि इतना अपसाइड मूवमेंट हो गया, इधर पे सेल कर देंगे तो ये ऑब्वियसली पुल बैक लेगा ही ना. पुल बैक के बाद एंट्री मारो इधर पे, और एल्स वेट फॉर दिस. 13 डिग्रीज है इधर पे ठंड. टेम्परेचर 13 डिग्रीज है इन बैंगलोर. हमारा 5 हजार है, मेरे से भी खराब हालत. बट इधर बैंगलोर वाले के लिए इतना भी बहुत होता है, बिकॉज वी हैव हैबिट ऑफ स्टेइंग इन 23, 22 या फिर 24.
What is normal temperature for us is 23 to 28. ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। इसके ऊपर चले गया तो बहुत गर्मी, इसके नीचे आ गया तो बहुत ठंड। आ जाए गोल्ड या तो बिटकॉइन, दो में से एक अच्छा सा आ जाए। ओके, ये मुन्ना तो लग रहा है कि इसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है भाई। अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आई कैन नॉट हेल्प इट। -3 है मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी भाई फिर। चलो, बिटकॉइन आ रहा है फाइनली अपने लेवल पर, बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। When you started, it has already started. We have flipped it from $20 to $32. Next trade we are planning in Bitcoin, and we'll aim to close our day with $44. It has already started. जब तक घर हो ठीक है, लेकिन जब वजह खाना, हाँ भाई, भी सेम वही है हाल। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे लिक्विडिटी स्वीप के लिए मर जा रहा है। जस्ट डाइंग फॉर द लिक्विडिटी स्वीप बिकॉज ऑफ आवर लेवल, हमारे लेवल से ही बार बार उठ रहा है। By the way, who is new to the stream, they can subscribe to the channel, like the stream. This level or this level? We'll be aiming for this level or this level for sales in gold. Okay, fine. So you trade on trading, but I can't see your balance. No, I trade on my XNS account. I'm using this trading view so that I can get access to my indicator. So this is my personal indicator which tells me, like you can say, pips mastermind key levels, which tells me the accurate levels which algorithms follow. So basically I mark the levels and trade on TradingView. I punch my order from my phone in my MT5. After punching my order, this is my XNS account. This is the real account which you can see. Here I'll show that my entry is done, my exit is done, where is my stop loss, everything. So everything will be transparent, don't worry. I directly don't trade on TradingView because XNS is not tiled up with TradingView, I guess. So we have to go and trade from the web terminal. But in the web terminal, there is no access to this indicator. We cannot add my indicator there. So I'm placing my trades in my phone only from the MT5.
So if I take trades along with you, will my capital also double? Like yes, yeah, definitely. If you want to know how I'm compounding it, you can go to my Telegram channel. It's on the description on of this channel. Okay, of this live stream, you can see my Telegram channel's link. There you'll get this Excel sheet. So from $20 we have flipped to $32. Now from 32, next time is 44. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Chat, I have a question for you guys, but I'm thinking should I ask or no? How much lot size will I need to use? Will you keep telling me the lot size while you take your trades? Yeah, definitely. Right now, when the capital is $32, I am going with 0.04 lot size with my stop loss of just $4. My stop losses are of just my stop loss is of just 10 pips. One second, my voice is echoing. Okay, so I'll tell you today's plan. Okay, so we'll be going with 0.04 lot size. Top loss should be of 10 pips, which is $4, and we'll be aiming for 35 pips minimum, that is around 12 to $13, so that we end up at $44 today. If we get more pips like 50, 60 pips, we'll grab as much as possible. The extra profits what we'll get, we'll use it like a buffer, okay, for the next trade. We'll use that extra profit like our stop loss of the next trade, so that we don't lose our initial capital. Currently, we are waiting for gold here to grab a liquidity from this level and a downside move. And in Bitcoin, we are waiting for a buy side trade. It should break this level, close at least 1 minute, one candle below this, then a reversal from here, and then we can go for a buy side entry. This is what we are planning. It's my 4th year in trading basically. I have two accounts. One is this challenge account, and I have another account in which I have around 5,321. So basically, I trade on two accounts. I trade on my personal account, in which I have bigger funds, and I trade on this challenge account also, which I'm aggressively scaling. This is my 4th year in trading. And you can join the Telegram channel. There I'll be posting the live stream link whenever I come live. And whoever wants the indicator which I use, which is Pips Mastermind key levels, you can contact me on Telegram. That's the
एडवांटेज ऑफ टॉकिंग इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि जिसको भी उर्दू नहीं आती है ना वो भी आते हैं। आने दो भाई, बढ़ने दो, लेट दिस चैनल ग्रो, लेट एवरीवन ग्रो टुगेदर। Bitcoin is it's mastermind 01. Okay, this is the link of my Telegram channel. Uh, Hassan bhai, can you also paste the link of my personal Telegram? इधर पे जाओ, go to my channel, this one. Paste the link of this also. If you want to contact me directly, personally, you can contact through this link, and the link which has been posted now, that's the group link, Telegram group, where I'll be posting the live stream links whenever I come. Does not work in Poland. What does not work in Poland? Acha, Telegram. Then you can contact me on my Instagram. You have my Instagram link also here. And trust me, the people who are seeing me from few days, they know the accuracy of this indicator. छोड़ो भाई, जिसको भी लेना है उधर जाके डिस्क्रिप्शन से दिल ले लेगा आईडी। बेटा, मन में लड्डू फूटा। This is my Telegram. You can Instagram. You can message me there directly. पता है मेरे को, even I am a boy. Do the live stream channel notifications to all, so that as soon as I come online, you guys will get the notification. Gold भैया, gold is seriously troubling a lot. Not going up, it's not going down. I lost almost in while watching someone stream and copy their states. Here on my stream, my first priority is, as soon as I start my day, I only focus on one thing, that I don't want to lose any money. Profits is secondary. The first thing is I should not lose any money today. So I get again by watching your stream and copying your trades. Don't only copy my trades, learn how I actually trade. Learn the logic behind my trades.
Basically, I trade supply and demand zone with liquidity. And the main component of my setup is liquidity. So whenever I don't see liquidity in any level, I don't trade that level. So basically, liquidity is, imagine this is a support zone, right? Whenever a support zone is broken, uh, fresh liquidity pops in, like the fresh sellers enter here, so their stop losses are above this level. So market always hunts the stop losses. So this is my key thing, the liquidity. भाईजान मेरे को भी नहीं पता है कितना होता है वो. 24.66. So you have lost around $44,000. If I calculate that into USDT, you have lost around $44,000. Quite impressive. Which broker you guys are using? Yeah, I know that. If we convert it into USD, it's around $44,000. 44 or $45,000. How much, bro? That's the national currency of Poland. What she's telling. Mhm. XNS, right? Yeah. XNS is the best with the best spreads and execution speed. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. It's fully sideways here. Bitcoin, gold is also sideways. ऐसा मत बोलो भाई, एक दिन आप भी अमीर होंगे. I'll tell you guys. I'll share one thing with you guys, okay, which I have not shared yet. So back you can see there is a sticker of Dubai skyline, right? Back you can see there is a sticker of Dubai skyline. So the day this account will be flipped to $1 lakh, after few days you will see that I'm actually sitting, मेरा जो actual दुबई का skyline होगा ना, that will be on my background. The day it will be flipped to $1 lakh. अभी भी मैं जा सकता हूँ, but I don't want to. बेटा मन में लड्डू फूटा.
अरे भाई, बंदा मैं जल्दी आऊँ, कोई तो अच्छा सेटअप बने। बीटीसी में भी एक सेल साइड ट्रेड बन रहा है। लिसन, नाउ if BTC breaks this level, closes one uh, candle above this of 1 minute time frame, then we'll go for a sell side trade. If not, then we'll just quietly sit. From tomorrow, what I'll do is, instead of coming live early, I'll just sit and watch the markets. Whenever there is a setup being formed, that time I'll come live. Or should I come like this only and sit and wait here in the live streams? See how which. It's better to wait for Bitcoin for a buy side trade only, because if you see in a higher time frame, now this is a breakout here, 1 hour time frame. Just need a proper entry point that we can go and set in a buy side trade, and from there we can get easily 200 300 pips trade also. I'll just be back in 1 minute.
Till then, if anyone have any doubt related to trading, they can ask me. Till the market moves, I'll just explain you about it. Anyways, there is no trade being formed until and unless it comes to our level. This is one level, and this is a buy side level in gold. Sorry, Bitcoin. Till then, you can ask me anything related to trading in which you have doubts related to risk management, psychology, or my strategy, anything. है वीडियो तो है. दिस इज माई स्ट्रैटेजीज वीडियो, बट ये जो वीडियो है ना, ये पुरानी हो गई है. जिसमें ओल्ड स्ट्रैटेजी जिसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. सो आई हैव अपग्रेडेड माई स्ट्रैटेजी. दैट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग दिस वीकेंड. बट प्रॉब्लम ये है कि आई विल अपलोड द वीडियो, बट you guys cannot understand it because the levels which I'll be using है, जो levels जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप लोगों के पास ये लेवल होंगे नहीं. You guys will not have the access to these levels, because of which it will be tough for you guys to trade. आप खुद से लेवल थोड़ी ना मार्क सब कर सकते. You can mark these kind of levels. Let's plan a buying trade from here. गोल्ड में 15 minutes buying level. Okay, let's plan a buying trade here. You can expect okay, trend line किधर है अपनी. Let us wait for one or two candles to close below this level. Then when it will reverse, go for a sell side trade. Okay, wait at least for one or two candle to close below this level. Then when it crosses, go for a buy side trade from here.
Until and unless this happens, we're not gonna plan any trade because this is a good buying side level here. Mm, just one candle to close below this level. Yeah, buy side. But I'm just waiting for at least one candle to close below this so that it can just remove the stop losses of these buyers who are present in this level. New sellers can enter here and then upside movement. Because if it goes without grabbing the liquidity, it will not go. It will not give that kind of moves which I am expecting. So I hope this happens here. Draw this trend line here. See, this is a buying level only here. A buying level here in gold. There you can see the rejections also. एक candle close हो जाए. This candle has not yet closed. H1 closing in river is highly the market cancel good then in H1 if it reverses, if it even makes a top week also here, if it has to go up, top week only will be around 40 to 50 pips. So easily we can get a good scalp for upside. But for that, at least one candle should close below this level. See, and this candle has not closed below this level. I need at least one candle to close. Even we'll see Bitcoin. Bitcoin is freaking fully sideways here. In 1 minute, right? 1 hour candle opening. If in 1 minute there is 1 hour candle opening, hmm. It's a candle close. Okay.
So one candle is open now. We are planning to buy gold only, but the thing is, a liquidity sweep over. We just need one liquidity sweep, right? Plan in gold is 50 pips. And yeah, buying only from here. Liquidity sweep नहीं हो रहा है. This is a proper level. Anyway, I know it will come down. आ रहा है. ये बना कैंडल की बॉटम विक बनाने आ रहा है. I mean, to make a bottom wick. Hmm. But Bitcoin is more stable compared to gold. और Bitcoin में ज़्यादा TP भी मिल सकता है.
Bitcoin we can get around 340 pips compared to gold. Gold अभी तो देखो it's toppiness here in gold. I feel. In Bitcoin there is rejection. Yeah, we did not cross even $50 because the setups were not formed in our favor and we don't capture selling wrong trades. Whenever there is a good trade, we are aiming around 46 trading days to reach 100k. To reach 2000, it will take us around 14 profitable trades to reach $2,400. Keep patience. As Bitcoin is coming to our level, be ready. कुछ भी बोलने दो. इंडिया दीपी वो बंदे लोग ने पहले ही 40 को 4,000 40 को 4 लाख गंवा के बैठा है. Yeah, whenever we get a profitable trade, we enter. You can see our exchange trade of Bitcoin. You can see our exchange stream. We have closed around how many? $40 to $50 in that one single trade. How can you trade in this kind of market where it's fully choppy, up and down? It's all about patience, matter of time. And compounding in the starting it's really slow, but when your account size goes up to 1 or 2,000, right? Then it becomes really fast. After a pullback, go for a buy side trade from here. I'm really very much patient. That's why I don't lose money. Making money is secondary. The first thing is you should not lose money. I like to go slow and steady. This is what I've learned from experience. Whenever you try to rush, you always lose money. Whenever you're slow,
and patiently wait for a setup, you always win. You can go see our previous live streams, how we book dollars. Okay, इसे बंद कर देता हूँ. Close this. Okay, so alert is also ready. Now everything is ready here. Draw this trend line here. At least this time Bitcoin should close at least one candle below this. Then I'll be taking my entry with 0.04 lot. Stop loss of 10 pips. At least now, just one liquidity sweep is needed. When yesterday's trade was so good, 90 pips with a stop loss of just 8 pips. गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली. इसको भी एक पुल बैक के बाद उठा लो ब्रो. Let it come little bit down, then again if it gives upside movement, then you can go for a buy side trade. But I'll personally trade on Bitcoin because Bitcoin looks more better for me. 0.04 lot size. Okay, so I'm trading on MT5. After my entry is done, I'll just show you guys on my XNS account also. Okay, great. Just a reversal from here now. First, let's observe here what's happening. Later we'll trade. सेलिंग बहुत तगड़ी आई है. 15 मिनट की कैंडल एक देखने को कैसी बन रही है. More 1 minute left. If it closes inside this level only, right, you can see taking rejection from our level. One second though, let me concentrate here.
I'll see the charts later. Patiently wait a bit. This is still on a support zone. Bingo. और ये this candle has just formed to remove the buyers who are present here on this level. को निकाल के अपसाइड मूव देने के लिए ये कैंडल. Don't be so much terrified here. जस्ट एक निकालने के लिए एक अपसाइड मूव देने का है. Just tell me, you guys can see that there is a breakdown here, right? On this breakdown, what happens? New sellers enter here. The sellers stop losses are up. The buyers who were there on the support zone, market has removed them. Now, where is the stop losses present? Upside, right? So it has to go up. Just wait patiently now. In this trade, I'll go with half quantity because the TP is big, right? TP, that means you have to aim for 60 pips. Let this give a break of structure here. देखते हैं. 0.02 रख लो because we are aiming for 60 pips, right? एक सेकंड रुको. We'll wait patiently. Wait. Don't rush. पहले देखने दो क्या हो रहा है. Five-minute time frame, it's confirmed that it's going to selling. What's happening in gold? Rejection again. Gold again, if it retests this level, you can go for a buy side trade again. If it retests this level. I'll personally be trading on Bitcoin. If anyone wants to try, they can try. You can aim for 100 pips. Selling जाएगा भी तो selling भी पकड़ लेंगे. I have my plan ready here in my mind. बस ये 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बैंड देख रहा हूँ मैं. सेलिंग में जाएगी तो नो प्रॉब्लम. इसके रिटेस्ट पर सेल मार देंगे. विल गो विद द फ्लो, नो प्रॉब्लम. धीरे धीरे.
If anyone wants to try, they can try this plan in gold who are desperate for trading. I'm not desperate. 5 minutes 15 minutes अब मैं कंफर्म तो हो चुका है. Going for selling only. So the level rate is बोलो ब्रो. हेलो. अभी मैं I'm audible, right? Yeah, my internet is fluctuating. I don't know when the stream will just go off. So यहाँ पर एक selling level है, right? Bitcoin is showing strength in selling. Maybe in next 7 minutes the candle will close here only. So in the 1 minute time frame, when Bitcoin will approach this level, right? सबसे पहले I'll just tell you how to enter your quantities here. Fine. If it touches this level, as soon as it touches, right, add your 50% quantity here. Then it will take a rejection, and if it crosses this level, add more 50% quantity here. Okay, so your average pricing will come somewhere here. So mark the same levels. One level be on 86,822, the another level will be on 86,879. So these two levels you mark. वैसे कितने टीपी पे ले रहे हैं? Can get a 90 pips trade here. इसको मैं बैठना नहीं लेकर जाऊंगा. गोल्ड लाइन से उठा सकते थे. बिटकॉइन कितने पिक्स गया गोल्ड? 60 pips. Okay. Bro, you guys have marked this level, right? Again, I'll just tell you guys the plan. Don't enter here.
As soon as it touches this level, ये zone पर 50% quantity add करो for sells. इधर से 10 pips of stop loss. Next 50% when it crosses this level, add more 50% quantity with a stop loss of 10 pips. ठीक है? And keep your TP for 90 pips from here. Okay, मेरा ये lag मर रहा है. I'll just close the string here. As soon as the entry will be triggered, I'll just again come back to live. Okay.